हमारे साथ हैं जनाब खिजर रियाज, जो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड में स्टार्टअप कम्युनिटी मैनेजर हैं। खिजर साहब पिछले 5 सालों से पाकिस्तान के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने और नौजवान एंटरप्रेन्योर्स की रहनुमाई में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हमारे दूसरे जज जनाब मोहम्मद अली मलिक साहब कॉमसेट्स के एलुमनाई होने के साथ साथ फिलिप मॉरिस और नेस्ले पाकिस्तान जैसे इदारों में शानदार करियर रखते हैं। आपने रीजन ऑफ द ईयर जैसे इनामात अपने नाम किए हैं और आजकल मॉन्डलीज कॉन्टिनेंटल बिस्किट्स में बतौर मैनेजर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। अब हम तारुफ करवाते हैं जनाब अहमद अली शाह का, जो इस वक्त प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के ओहदे पर फाइज हैं। इसके अलावा वो स्टार्टअप कम्युनिटी में एक फाल रोल अदा करते हुए एक स्टार्टअप कोच के तौर पर भी जाने जाते हैं। वो स्टार्टअप्स की तरक्की को फ़रोग देने के लिए वर्ल्ड बैंक में इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के तौर पर भी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। अब बारी है LH1 रेड रूम से दूसरी टीम अनाउंस करने की। तो आप सबके ख्यालात में ये दूसरी टीम कौन हो सकती है? LH1 से दूसरी टीम का तारुफ फ़ज़ाइया डिग्री कॉलेज ARF कामरा से है मरियम, आमिना और मोहम्मद अतीकुर रहमान। एक और अनाउंसमेंट सुन ले, जितनी भी टीम्स यहाँ पर मौजूद हैं प्लीज तैयार रहिए, किसी का नाम भी किसी वक्त भी लिया जा सकता है। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। Imagine if the walls around us didn't just stand still. Imagine if the walls that cleans the air, reduce pollution and make every room cleaner. So this is Plant Breathe, a wall tile that works like a natural air purifier. No electricity, no maintenance, no noise, just clean, fresh air. You know, indoor air is 3 to 5 times more polluted than outdoor air. Dust, smokes, paint vapors, chemicals, and the worst things, most air purifiers are expensive, noisy, and create e-waste. So whether it is classrooms, hostels, cafes, all needs a cleaner, which is cheaper and eco-friendly solution. So here is Plant Breathe, a wall tile. So basically the solution we are offering is Plant Breath tiles, which consist of 4 natural airs that can purify air passively without the use of any energy. So first of all we have the active purifying layer, in which we will use bioactive materials like fungi or algae etc. And then it will absorb some particulate matters and toxins. Secondly, we would have the adsorbent layer, which consists of charcoal, zeolite or carbon that can trap toxins, volatile organic carbons. Thirdly, we would have the porous ceramic base, which will ensure the airflow and moisture regulation, and the hydrogen layer, which will ensure that the whole system remains hydrated. Next. So how this actually works is that on top we have this porous layer. Air will move through the porous layer into the active biofilament layer. Then it will get purified, and under the biofilament layer we would have the adsorbent layer. Then it will get purified by the adsorbent layer, and lastly we would have the hydrogen layer, which will provide water for the algal layer to grow. I am fully excited to introduce our business startup backed up by an investment of PKR 2,15,000. We are revolutionizing our business model with the cutting edge technologies and sustainable practice. Our focus area include ceramic based production, charcoal, zeolite absorbent, bioactive purification layer, molds, tools,
printing, marketing, stall and transport. Everything is sourced locally and fully scalable. Now stepping toward profit and pricing. Due to shortage of time, we have a quality of tiles which can be made. The rate at which we are manufacturing is PKR 170 to 200 PKR, and the rate at which we are selling is 250 to 350 PKR, and the profit we are gaining from each tile is 170 to 200 PKR. So the question arises, what is its market advantage? Why it stand out in the market? Why we choose this tile instead of the other tiles? So plant breadth means a modern answer for tackling indoor pollution. It stand out in market because of its incredible advantage. Zero electricity, zero maintenance, uses local material, low cost or highly scalable, and it can be used as interior decor plus purifier. So yeah, this was a business idea. If you have any question, you may ask.